Hello everyone, welcome back. So, in the subject mechanical measurement and metrology, we have started in the last portion about the angular measurement, and we have seen about the types of protectors, that was vernier protector, then bevel protector. Okay, and how the measurement is done using the vernier protector. Okay. So about the introduction portion, important part was here that the degree is divided into 60, that is called as minute, and the 1 minute is divided into 60 part, that is the second. And there are two types, vernier and optical bevel protector. In vernier, there was one with the acute angle arrangement, and this is without acute angle arrangement. Then the measurement process and optical bevel protector. Up to this, I explained in the previous lecture. Now let us start with today's topic, that is about the sign bar. So here you can see in the figure the sign bar is shown, and this instrument is used for the precise angle measurement. Okay, it is having precisely ground two steel rolls. Okay, these two perfectly ground rolls, and this bar, that is called as the sign bar, and it is having the upper face surface very flat, and the holes or relief holes are provided to reduce the weight of this. Okay, and there is one end face also, and end face over here. These are to the setting rules. And why the name of this bar is called sign bar, we will see from the working principle, because for angle measurement it uses the sine formula. Okay, and here, to increase the height over here, to set the sign bar at a particular position, we can use a stack of slip gauges. Now you will come to know that the slip gauges are used over here mostly for to set the sign bar at particular position. So the sign bar is a precision angle measuring instrument used along with slip gauges. Slip gauges के साथ वो use होगा, and it is used to measure the angle very accurately and or to locate the work to given angle. जो भी वर्क है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे हमको अगर सेट करना है, या दूसरा हमको एंगल मेजर करना है, सो इन दोनों एप्लीकेशंस में ही जो साइन बार है वो यूज होगा. These two are the side faces that are also perfectly ground, and this is the lower surface and there is one end surface. So दो चीजों के लिए साइन बार यूज हो सकता है, एक तो एंगल मेजरमेंट के लिए, और या तो फिर जो कोई वर्क पीस है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट करना है उसके लिए. Now let us see the construction of the sign bar. Sign bars are made from high carbon, high chromium, corrosion resistant steel, suitably hardened, precision ground and stabilized. They are made from the high carbon, high chromium, corrosion resistant steel, suitably hardened, precision ground and stabilized. जो वो हार्डन किया जाता है उसको, ठीक है, ग्राउंड किया जाता है और स्टेबिलाइज किया जाता है, और वो मटेरियल यहाँ पे जो स्टील होगा, लेकिन जिसमें कार्बन कंटेंट और क्रोमियम ज्यादा होगा ताकि वो कोरोजन रेजिस्टेंस हो. द hardening is done to make it
robust, okay, to make it strong. Now the two cylinders of equal diameter are attached at the ends. We have seen here that the two cylinders are attached at the ends. Okay. Now the axes of these two cylinders are mutually parallel to each other and also parallel to the end at the exact distance from the upper surface of the sine bar. Here you can see that the distance from here to here, that is the fixed parallel, and the center is over here. From the upper surface this distance is also fixed, okay, and over here this distance is also fixed. The center to center distance between the rollers or plugs is available for fixed distance of 100, 200, 250 mm and 300 mm. This distance is fixed for the sine bars. They are available in this range only. Okay, length of 100, 200, 250 and 300. The diameter of plugs or roller must be of same size and center distance between them is accurate. जो डायमीटर है प्लग्स और रोलर का वो सेम होना चाहिए, जो उनकी साइज है डायमीटर की वो सेम होनी चाहिए, एंड द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम इज एक्यूरेट, और उन दोनों के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए. The important condition for sine bar is that the surface of sine bar must be parallel to central lines of rollers. यानी कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है साइन बार में, कि जो भी सरफेस है साइन बार की वो पैरेलल होनी चाहिए टू द सेंटर लाइन ऑफ रोलर. जो यहाँ पे सरफेस है साइन बार की वो रोलर की सेंटर लाइन के साथ पैरेलल होनी चाहिए. और जो भी डायमीटर है प्लग और रोलर का वो अगर सेम साइज का नहीं होगा तो वो जो सेंटर है वो हमको एक्यूरेट नहीं मिलेगा. अगर ये डायमीटर है वो सपोज ज़्यादा है और ये कम है तो जो लाइन है वो हमको स्ट्रेट नहीं मिलेगी. सो वो परफेक्टली ग्राउंड और सेम साइज के होने चाहिए. Some holes are drilled in the body of sine bar to reduce the weight and to facilitate handling. इजी हैंडलिंग के लिए और उसका वेट कम करने के लिए उसको यहाँ पे रिलीफ होल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए होंगे. ठीक है. नाउ लेट अस सी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइन बार. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ साइन बार relies upon the application of trigonometry. Okay, simple trigonometrical application is used for applying the principle of sine bar. Now one roller of the sine bar is placed on the surface plate and the combination of slip gauges is inserted under the second roller for setting given angle. कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल सेट करने के लिए यहाँ पे जैसे हमने देखा तो यहाँ पे ये जो वर्क साइन बार है ये उसको कहाँ पे रखा जाएगा, जो वर्क पीस है वर्क पीस की जो सरफेस है वर्किंग सरफेस उसके ऊपर वन एंड रखा जाएगा और दूसरा जो एंड है पहले सबसे पहले स्लिप गेजेस और उसके ऊपर जो सेकंड एंड है वो यहाँ पे रखा जाएगा. नाउ इफ h is the height of combination of slip gauges. Suppose this is the h height over here, h over here, this height, and this is the length over here, that is the L, is the distance between two rollers. Then sine theta, which will be equal to h by L, or theta is equal to the sine inverse h upon L. So with this we can measure the angle as we are aware of the height, okay, and length as well, length of the sine bar and height of the slip gauges stack to the roller. Okay, so thus
The angle to be measured or to be set is determined by the indirect method as a function of sine bar. For this reason, the device is called as the sine bar और इसी वजह से इसको साइन बार कहा जाता है. The accuracy requirements of a sine bar. There are three accuracy requirements. First one is the rollers must be of equal diameter and true geometrical cylinders. जो यहाँ पे रोलर्स है वो इक्वल डायमीटर के होने चाहिए और उसकी जियोमेट्री है वो सेम होनी चाहिए. वो अगर चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू एंगल की. फिर डिस्टेंस बिटवीन रोलर एक्सिस मस्ट बी प्रिसाइज एंड नोन. जो डिस्टेंस है वो एल है, एल की वैल्यू वो प्रिसाइज होनी चाहिए और वो नॉन होनी चाहिए. दीज एक्सिस मस्ट बी म्यूचुअली पैरेलल और वो दोनों जो एक्सिस है वो म्यूचुअली पैरेलल होनी चाहिए. अपर सरफेस of the bar must be flat and parallel with the roller axis and equidistant from the each other. Okay. डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए फ्रॉम ईच अदर और जो अपर सरफेस है बाहर की वो फ्लैट होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए विद द रोलर एक्सिस. Now let us see the use of sine bar. So the first use is the locating any work to given angle. जो कोई भी वर्क है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे लोकेट करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं साइन बार को. As we have discussed, the sine theta is equal to h by L, where h be the height of slip gauge combination, L is the distance between the center of roller and theta is the angle to be set. जो भी हम एंगल सेट करना है हमें वो एंगल है थीटा. L is the distance between the center of rollers. जो भी सेंटर रोलर्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है that is the L. Thus, knowing the theta, h can be found out and any workpiece could be set at this angle. Okay. यानी कि थीटा है वो अगर हमको पता है कि अगर 30 डिग्री पे सेट करना है ठीक है तो उसके लिए लेंथ ऑफ द डिस्टेंस तो मालूम है. सो यहाँ पे रिवर्स से हमको पता चलेगा L इंटू साइन 30 यानी कि लेंथ सपोज 100 है और यहाँ पे साइन 30 है ठीक है. तो हमको जो h है हाइट हाइट जो चाहिए वो हमको मिल जाएगी. सो as the top face of the sine bar is inclined at angle theta to the surface plate, for better result, both the rollers could also be placed on the slip gauges of height h1 and h2 respectively. For better result, both the rollers can be placed at height of h1 and h2 respectively, so that the difference between them, for example this is the slip gauges. Now suppose we put the below these rollers slip gauges so we can perfectly measure the angle and the height difference is taken over here. The h1 and h2 the difference between both is taken. Second type is checking or measuring unknown angles. The first we have seen the locating any work to given angle, and the second type over here is the checking or measuring the unknown angle. We want to check or measure the unknown angle when the component is of small size. When the component is of small size, the component is placed above the sine bar. You can see this is our component, okay, and the straightness is measured with the measuring dial gauge over here. Figure shows the sine bar is used to check the small component that may be mounted upon it, and the dial gauge is mounted upon a suitable stand, then set at one end of work
and move along the upper surface of the component. फिर उसको अपर सरफेस है वहां तक मूव किया जाएगा. If there is a variation in parallelism of the upper surface of component and the surface plate, it indicated by the dial gauge. अगर उसमें वेरिएशन होगा पैरेलिज्म में या फिर एंगल जो है वो सेट नहीं हुआ होगा प्रॉपर, सो वहां पे जो डायल इंडिकेटर है वो वेरिएशन इंडिकेट करेगा. सो वह अगर वो कम होगा तो हम स्लिप गेज ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो स्लिप गेज को रिमूव करेंगे. ठीक. वो कैसे पता चलेगा? सपोज इट शोज वेरिएशन ओवर इन दिस साइड, the angle is like this. Okay, so we will add slip gauges and the angle is on the left side. Okay, lower angle is on the left side, higher angle is over here, so we will remove slip gauge. Okay, if there is variation in parallelism, we can check, and the combination of slip gauges is so adjusted that the upper surface of component is truly parallel with the surface plate. जो upper surface of component है वो truly parallel होगी with the surface plate, and the angle of component is then calculated by this relation theta is equal to sin inverse h by l. l हमको पता है, h हमको यहाँ पे मेजर करना पड़ेगा. h को मेजर करने से हमको जो थीटा है वो यहाँ पे मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ द चेकिंग और measuring the unknown angle is done when a component is of small size. Up to this we will keep in today's lecture. In next lecture we will see the measurement of large size diameter angle measurement and the sine center arrangement. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.